Hello, beta. Good evening. The aim of this lecture is to go ahead and help you understand an important concept which is called as input-output matrix. But this is very, very important from the point of view of a lot of exams. And, we have to go ahead and we will first derive this and then we will do a numerical on this. So, to begin with, try to see whenever you read any model that who is the person behind that model, who gave that model, वो बहुत important है जानना. So this was invented by Professor Leontief, and his full name was Vasily W. Leontief. In 1951. So 1951 में Leontief gave the model of input-output matrix. ये क्या करता है? अब ये समझो पहले. See, in this model, we assume interrelationship between the industries. मतलब माने क्या मतलब है इसका? So suppose I am saying that there is an industry of railways, and I'm telling you that there is an industry which is of transportation, road transportation, and there is an industry of coal, and there is an industry of steel. So this model assumes that all these industries are related with each other. ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे से रिलेटेड होंगी. और ये कैसे रिलेटेड होंगे एक दूसरे से? This model assumes that input of one industry becomes the output or the raw material for the other industry. मतलब जैसे for example and vice versa. जैसे for example, बेटा स्टील इंडस्ट्री ने कुछ स्टील प्रोड्यूस किया. अब ये स्टील रेलवे भी यूज करेगा, रोड ट्रांसपोर्ट भी यूज करेगा, शायद कोल इंडस्ट्री भी कुछ मशीन बनाने के लिए यूज करे जिससे वो आगे कोल प्रोडक्शन कर पाए. सो द स्टील यू प्रोड्यूस्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री, जो स्टील इंडस्ट्री ने स्टील प्रोड्यूस किया है वो बाकी हर इंडस्ट्री ने यूज किया है, इंक्लूडिंग स्टील. स्टील में भी वो रॉ मटेरियल की तरह स्टील यूज हो रहा है. In the same way, the coal produced by the coal industry is used as an input for the coal industry. It is used as an input for the steel industry. It is used as an input for other industries. तो बच्चे ये हो गया हमारा interdependency. Each industry is dependent on the other industry. ठीक है, तो उस dependency को analyze करना, to analyze that dependency between industries, that is done by the input-output model. So please देखो बच्चे, please write this down. It analyzes the inter-industry relationship in order to understand interdependency and complexities of economy. So we want to understand how economies are related to each other. कैसे एक economy दूसरे economy से, कैसे एक industry दूसरे industry से related है, उसके लिए हम एक matrix बनाते हैं. उसको ही हम input output matrix बोलते हैं, और उसी पे हमारा ये model based है, input output model. So we can say that the input of one industry is used as output of other and vice versa. एक का आउटपुट दूसरों के लिए इनपुट का काम करेगा and vice versa.
इसी को हम इनपुट आउटपुट इंडस्ट्री का नाम दे देंगे, या इनपुट आउटपुट मॉडल या इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स का नाम देंगे. ओके बेटा, नाउ there are some assumptions, and these assumptions are important from the point of view of exam. So let's write down these assumptions. पहले हम इन assumptions को लिख लेते हैं. First assumption. बच्चे हम लिख सकते हैं that the economy is divided in two parts. The first one is inter-industry demand, and the second one is final demand. एक example समझ लो. जैसे मैंने अगर आपको बोला कि कोई एक हमने इंडस्ट्री ले ली, सपोज आई से इंडस्ट्री ए. हाँ, अब इस इंडस्ट्री ए ने जो भी प्रोडक्शन किया है, वॉट एवर इट हैज प्रोड्यूस्ड, ये इंडस्ट्री ए में भी यूज होगा एज एन इनपुट, ये इंडस्ट्री बी में भी यूज होगा एज एन इनपुट, ये इंडस्ट्री सी में भी यूज होगा एज एन इनपुट, और जो इस इंडस्ट्री ने ए ने प्रोड्यूस किया है, ये शायद फाइनल कंज्यूमर डायरेक्टली भी डिमांड कर ले, तो इसकी फाइनल डिमांड भी हो सकती है. तो ए ने जो भी प्रोड्यूस किया, वॉट एवर हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय ए, it will be used by industry A itself, it will be used by B, it will be used by C, and it will be used by final consumer also. ये चार parts में we will be able to divide it. ठीक है? So this is what we have written here, that there will be inter-industry demand, मतलब this part, and there will be final demand, which means this part. Second. The second point is that no two products are produced jointly. हाँ, ऐसा नहीं है कि कॉटन और स्टील एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं एक ही मशीन में, या एक साथ कहीं पे भी प्रोड्यूस हो रहे हैं. No two products, they are produced jointly. हर प्रोडक्ट इंडिविजुअली प्रोड्यूस हो रहा है. Each product is produced individually, and each industry is producing just one product. Steel industry तो सिर्फ steel produce कर रही है, coal industry तो सिर्फ coal produce कर रही है. So each industry produces only one homogeneous product. Right, beta? Okay, now let's come to the third point. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन हम जहां पे भी एज्यूम करेंगे, ऑल्दो यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, बट वेरेवर जहां पे भी प्रोडक्शन सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वेरेवर प्रोडक्शन यूनिट्स आर इन्वॉल्व, यू नीड टू एज्यूम सम सर्टेन थिंग्स अबाउट द प्रोडक्शन. So in this Leontief model, he assumed that I will have a linear homogeneous production function. माने अगर मैंने अपना, सपोज मैं अपनी स्टील इंडस्ट्री में जो भी इनपुट्स यूज कर रही हूँ, if I will double those inputs, then the output I produce will also be doubled. So each producing sector satisfies the properties of linear homogeneous production function. Right, beta? तो हर एक का जो प्रोडक्शन फंक्शन है, इट इज लीनियर एंड होमोजेनस. दैट मीन्स वो स्केलिंग लीनियरली हो रही है, दैट इफ आई डबल द इनपुट्स द आउटपुट विल डबल. ओके, दैट्स इट. हाँ, एंड
एक और चीज है which is sometimes asked in exam, so you should just remember that whichever inputs we are using, they are in fixed proportion. तो ये जो इनपुट्स हम यूज कर रहे हैं बच्चे, इनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड है, इनका जो रेशियो है, द रेशियो इन विच दे आर बीइंग यूज्ड, दैट इज फिक्स्ड. नाउ we need to prepare something which is known as an input output table. अब ये input output table क्या है? So what we will do is we will prepare two sides. यहां हमने लिख लिया output और यहां हमने लिख लिया input. I am taking three industries, industry 1, 2 and 3. ये इंडस्ट्री 1 का आउटपुट है x1, ये इंडस्ट्री 2 का आउटपुट है x2 और ये इंडस्ट्री 3 का आउटपुट है x3. इंडस्ट्री 1's आउटपुट, इंडस्ट्री 1 का जो भी आउटपुट है, इट कैन बी यूज्ड बाय इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, इंडस्ट्री 3 और फाइनल कंज्यूमर. जो भी इसने आउटपुट प्रोड्यूस किया उसमें कुछ पार्ट इनपुट की तरह यूज हो जाएगा उसी इंडस्ट्री में. सम पार्ट विल बी यूज्ड एज इनपुट इन द सेकेंड इंडस्ट्री, some part will be used as input in the third industry, and some part will be consumed by the final consumer. So how can we go ahead and write this? So input, so whatever output is produced by industry 1, it can be used by industry 1, it can be used by industry 2, it can be used by industry 3, it can be used by final consumer. Same, whatever output is produced by industry 2, जो भी output industry 2 ने produce किया, it can be used by industry 1, it can be used as input by industry 2, it can be used as input by industry 3, and it can be used as final in output. हाँ, demand, final demand में आ सकता है. Same, whatever is the output produced by industry 3, by industry 3, it can be used by industry 1 as an input. जो भी industry 3 ने produce किया वो industry 2 use कर लेगा as an input, वो industry 3 अपने आप में use कर लेगी as an input, या वो final demand में आ जाएगा by the consumer. But note that the column is representing the inputs. माने when I talk about the first column, when I talk about the first column, इस column को जब हम देखते हैं, ये column represent करता है inputs used by industry 1. ये क्या column represent कर रहा है बेटा? Inputs used by industry 1, है ना. industry 1 अपनी खुद की इंडस्ट्री का from its own industry it is using this much. From industry 2 it uses this much as input. From industry 3 it uses this much as input. Maybe sometimes in exam you may be given an additional column of labor, so it may be using some amount of labor also. So industry 1 can use L1 amount of labor. But this column, if I look into the column, अगर मैं column 1 देखती हूँ बच्चे, that shows input used by industry 1. Similarly, if I look into the second column, अगर मैं second column में देखूं, if I look into the second column, beta, it represents the inputs used by industry 2. Inputs used by industry 2. And similarly, if I look into the third column, बच्चे, third column, it is showing inputs used by industry 3. देखो, उसने industry 3 ने industry 1 के इतने inputs लिए, industry 2 के इतने inputs लिए, industry 3 के अपने आप के इतने inputs लिए और इतना labor use किया. So the columns represent the inputs used. And therefore columns cannot have any units. Column will not have same unit. क्यों?
क्योंकि शायद आई एम यूजिंग दीज मेनी यूनिट्स ऑफ कॉटन, these many units of cloth, these many units of thread. So they cannot have the same unit. Column का unit same नहीं हो सकता है. Now look into the row बचे. This is the amount of good one consumed by industry one. Amount of good one consumed by industry two. Amount of good one consumed by industry three. Amount of good one consumed by consumer. So if I add these together, they will give me the total amount of good one. So ये same unit में होगा. This will be in the same unit. So what I can go ahead and do therefore is that I can go ahead and I can say कि अगर मुझे final demand मतलब if I have to find out how much is the total output of the first industry, मुझे पहली इंडस्ट्री का टोटल आउटपुट निकालना है, then I just have to go ahead and I have to add. ये समझ में आ रही है बात? So let me go ahead and add this in this case. So what will I get बच्चे? I will get, I hope all of you are getting this. This is बच्चे output of industry 1. ये कहाँ यूज हो रहा है? इंडस्ट्री 1 अपने आप में यूज कर रही है. इंडस्ट्री 2 इंडस्ट्री 1 का आउटपुट यूज कर रही है. इंडस्ट्री 3 इंडस्ट्री 1 का आउटपुट यूज कर रही है. और फाइनल कंज्यूमर भी इंडस्ट्री 1 का आउटपुट यूज कर रहे हैं. सिमिलरली इफ आई राइट x2, देन इंडस्ट्री 1 is using amount from industry 2. Industry 2 is using from 2. Industry 3 is using from 2. And consumer, final consumer भी use कर रहा है. Similarly, if I write for industry 3, कि total industry 3 ने जो produce किया है, where all it is being used. So it is used by industry 1. जो भी 3 ने output produce किया, it is used by industry 1. It is used by industry 2. It is used by industry 3 and it is used by final consumer. So I will get X31 plus X32 plus X33 plus F3. Clear हुई है बात? अब हमें इसमें से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकालनी है. बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, उसके बाद हम वी आर डन. बस उतना अगर समझ में आ गया तो सब कुछ हो गया. बहुत ध्यान से समझो. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके बेटा, देखो ध्यान से. बेटा जस्ट लुक बैक हियर. बहुत ध्यान से. हाँ, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक थिंग क्लियर फॉर वंस. देखो, ये कॉलम इंडस्ट्री 1 के इनपुट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं. कॉलम, दिस कॉलम, थोड़ा सा लेट मी जस्ट जूम आउट. ये कॉलम बताता है इंडस्ट्री 1 के इनपुट्स. ये कॉलम बताता है इंडस्ट्री 1 इनपुट्स कि कितने कितने इनपुट इंडस्ट्री 1 को लगे. दिस कॉलम, हाँ बेटा, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडस्ट्री 1 ने x1 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाया. इट प्रोड्यूस्ड x1 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो बट गया इंडस्ट्री 1, 2, 3 और कंज्यूमर में. तो आउटपुट तो ये बना. दिस इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय दिस इंडस्ट्री 1. बट इनपुट ये लगे हैं. So input is reflected in the column. Output is reflected here. Very carefully. बहुत important है बच्चे. बेटा output is reflected here. ये है output. ये जो output x1 है ना, this is distributed to industry 1, industry 2, industry 3 and consumers. But to make this output, इस output को बनाने के लिए, to make this output, this industry used these many inputs. It used x11 units of input 1, x21 units of input 2, x31 units of input 3 and L1 units of labor. ये inputs लगे हैं. तो
I can say that industry 1 ने X11 यूनिट्स यूज किए इनपुट 1 के, X21 units it used of input 2, X31 units it used for input 3 to produce X1 units of the output. Output कितना बन रहा है बच्चे? X1 units. It used this much input, this much input, this much input to produce X1 units of the output. तो एक यूनिट के लिए कितने इनपुट लगेंगे? फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट. ये सबसे कंफ्यूजिंग टास्क है, बहुत ध्यान से समझना. फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट it will require X11 by X1 units of input 1, X21 by X1 units of input 2, X31 by X1 units of input. Clear हुआ? Let me repeat this one. बहुत ध्यान से देखो. I have prepared my input output matrix. मैंने ये बना दिया input output matrix. बच्चे यहां पर here, let me just take this a bit here. हाँ बेटा, here I am taking output, right? Here I am taking input. This is my input. This is my output. मैंने बोला कि ये जो आउटपुट है ना इंडस्ट्री 1 का, ये इंडस्ट्री 1, 2, 3 ने यूज किया और फाइनल कंज्यूमर ने भी यूज किया. किस किस ने यूज किया? इंडस्ट्री 1, 2, 3 एंड फाइनल कंज्यूमर. टुगेदर दे आर यूजिंग वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड. जो भी इंडस्ट्री 1 ने प्रोड्यूस किया वो कैसे बट गया? इट स्प्रेड विद इंडस्ट्री 1, 2, 3 एंड फाइनल कंज्यूमर. बेटा हियर आई एम टेकिंग द इनपुट टू प्रोड्यूस दीज मेनी यूनिट्स. इंडस्ट्री 1 has to use this many units of its own. अपने खुद की इंडस्ट्री के उसने इतने यूनिट्स लगाए, but it has to use X2 and X3 also. मतलब उसने कुछ दूसरे यूनिट्स, दूसरे इंडस्ट्री के भी यूनिट्स लगाए. This column represents the input used to produce X1 units of the output. So to produce 1 unit of output, अगर एक यूनिट आउटपुट का प्रोड्यूस करना है, I have to divide each one of them by X1. कॉलम 1 को मैंने X1 से डिवाइड कर, राइट? एक और थिंग, दिस इज जस्ट फॉर मगिंग अप, हाँ, रट्टाफाई करने के लिए. See that if I see 1 here, I will see 1 here. 1 here I have to divide with X1. 1 here I have to divide with X1. तो अगर मुझे डिनोमिनेटर में X1 से कब डिवाइड करेंगे? जब जो सेकंड J है, मतलब Xij को Xj से डिवाइड किया जाएगा. Are you getting it? So if I see 1 here, I will divide it with 1. If it would have been 2 here, I would have divided it with 2. तो इससे अब हमें एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, राइट बेटा? This coefficient matrix is formed by AIJs, जहां पर हर AIJ होगा Xij by Xj. क्या होगा बच्चे? It will be Xij by Xj. So हमारा जो coefficient matrix बनेगा, it will be A11, A12, A13, A21, A22, अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना, इट विल बी क्लियर. A31, A32, A33. Right, beta? Where try to understand that this A11, ये जो A11 है यहाँ पर, this is representing X11 by X1. A12 बच्चे, this represents X12 by X2. ये देखो ध्यान से, whatever you see here, you need to divide it by that. तब जाके ये इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स फॉर्म होगा. नाउ
I can say that ये जो matrix है, this matrix that I have formed, this represents input required to produce 1 unit of output. 1 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इतने इनपुट्स चाहिए होंगे. टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट आई रिक्वायर दीज मेनी इनपुट्स. सो फॉर x यूनिट्स कितने हो जाएंगे? आई विल मल्टीप्लाई दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विद x. ये तो बच्चे इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट हो गई. बट आई हैव सम फाइनल रिक्वायरमेंट आल्सो ना, तो आई विल ऐड दैट फाइनल रिक्वायरमेंट and this will give me the total output of good x. So total output of x, ये जो भी हमारा total output है x का, it has been divided in 2 components. This is the industry demand and this is the final demand. Can I solve for the value of x? Yes, I can just solve. So बच्चे, what will happen? ax plus f is equal to x. So f will be, ये बेटा 1 into x है ना, but this is matrix, तो ये हो जाएगा I into x. हाँ, तो f will be ix minus ax. So f will be I minus a into x. I have to find x from here. So beta x will be, it will go here and become inverse I minus a inverse into, ये हो जाएगी आपकी value of x. This will be the value of x. I will give you a question and everything will become clear. Let's do a numerical on this. You're given 2 industries, agriculture and industry. ठीक है? So agricultural sector and industrial sector. Right? And it says that the input used by agricultural sector in agricultural sector is 50. This is 100. Ah, beta, this is 150. This is industrial sector. This is 250. And this is the final demand. The final demand given to you is 100 by consumers. Agricultural products की 100 है और इसकी 150 है. The question is saying, find output produced by agricultural and industrial sector. आपको इनका आउटपुट निकालना है. ठीक है जी. Now try to see. But first of all, we need to understand कि अगर मैं इस portion को, if I map it with what we have seen above, हाँ बेटा, so this will be x11, x12, x21, x22. So I am just writing it like this only. मैं ऐसे ही लिख देती हूँ इसको. ये हो जाएगा x11, x12, ये हो गया इंडस्ट्री 1. हाँ, ये हो गया f1. ये हो गई इंडस्ट्री 2. x21, x22, f2. ठीक है बेटा. अब सबसे पहले what do we need to make? We need to make technology coefficient matrix. मतलब हमें वो A form करना है. We need to form that A. What is our technology coefficient matrix? It is of the form Aij, where Aij can be defined as Xij by Xj. So Xij by Xj will mean X11 by X1. Here I have X12 now. So X12 by X2. But here I have X21 now. So X21 by X1. And ये हो जाएगा X22 by X2. So I have divided this and formulated Aij. तो इसके टर्म्स में कैसे होगा ये? How will I be able to do this? कैसे करें इस चीज को? बेटा, if I were to find X1, तो X1 के लिए I will add 150, 50, 200 plus 100, 300. तो मेरा X1 टोटल हो जाएगा 300. इनको ऐड करके my X2 total will be 100 plus 250, 350 plus 150,
that is 350 plus 150 will be 500. Now I will formulate this coefficient matrix. So how will I get this coefficient matrix? कैसे आ जाएगी मेरे पास ये coefficient matrix? देखो कॉलम को डिवाइड करना है रो के एंड से, सो 50 डिवाइडेड बाय 300. कॉलम को, पूरे कॉलम को, जो ये है ये इनपुट फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर है, ये एग्रीकल्चरल सेक्टर के आउटपुट से डिवाइड होंगे, राइट? सो 100 डिवाइडेड बाय 300, राइट बेटा? देन दिस इज द इनपुट फॉर द industrial sector. It will be divided by the output of industrial sector. So 150 divided by 500 and 250 divided by 500. But this will be called your technology coefficient matrix. इसको क्या बोल देंगे? We will call this as technology coefficient matrix. So if I want to solve for this technology coefficient matrix, what will I get? I will get this as 0.17, 15 by 50, 0.30, 0.33 and 0.50. ये हो गई मेरी matrix A. Now the question has asked me to find out the final output of the two industry. तो उसका formula क्या है? I minus A inverse into F. So I can just go ahead and say that if I were to go ahead and find X, X will be I minus A inverse into F. So I minus A will be what? 1, 0, 0, 1. Minus A will be what? 0.17, 0.30, 0.33, 0.50. So this will be 0.83 minus 0.30 minus 0.33, 0.50. बेटा अब मुझे I minus A का इनवर्स निकालना है, so it will be 1 upon determinant of this thing into adjoint of this matrix. तो इस matrix के adjoint के लिए what will we do? Very simple, we will change these two, right, and change the sign of these two, right? So we will get adjoint of the matrix will be 0.50, 0.30, 0.33 and 0.83. Right, beta? And what is going to be the determinant of the matrix? Just multiply and solve for me. So it will be 0.83 into 0.50 minus 0.33 into 0.30. So when you will solve this, you will get 0.40. Isko solve kar lena, right? So you will get this as 1 upon 0.40 into adjoint of the matrix. Okay, so this is your A minus I minus A inverse, ye wala part. I need to multiply this with final demand, and final demand is given to me as 100 and 150. So I will just multiply this with 100 and 150. So what will I get, beta? I will get 0.5 into 100 plus 0.30 into 150 divided by 0.40 and 0.33 into 100 plus 0.83 into 150 divided by 0.40. So when you will solve this, then beta you will go ahead and you will get the answer as 237.5. Please check the answers, huh? And 393.75. So ये आपकी demand हो जाएगी in out. This will be the final outputs. This is the output of industry 1 and output of industry 2. Clear? Now, suppose they change the question and they tell you ki na, industry 1 uses 40% of the labor force and industry 2 uses 60% of the labor force, ऐसा कुछ. Yeah, or they go ahead and say that to produce 1 unit of output, industry 1 requires 4 labor and industry 2 requires 7 labors. So calculate
wage paid by industry when wage rate is 10, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन दे दिया. So beta, I have already found out the final output produced by the two industry. So how much will be labor requirement by industry 1? It will be 237.5 into 4. What will be labor requirement by industry 2? It will be 393.75 into 7. और इतने लेबर को, हर लेबर को they're paying 10 rupees. So into 10 is the wage rate paid, into 10 is the wage paid. That is the wage paid by the different industries. Then you can alter the question and check. Achha, suppose they go ahead and say ki the final demand changed and the new final demand is not 100 and 150, but rather the new final demand is 70 and 350. The new final demand is 70 and 350. तो क्या हो गया? No problem ना. In the final demand, instead of 100 and 150, you will multiply it with 70 and 350 and get the new answer. The question can be altered, but you have to remember how we formulated the technology matrix. If you can find the technology matrix, then you can go ahead and solve this question easily, right? So this is how you can go ahead